प्यार, इश्क, मोहब्बत या लव, नाम चाहे कोई भी हो, दुनिया की सबसे स्पेशल फीलिंग है प्यार। और इसी प्यार को टर्न ऑन करने के लिए आगे हैं हम ऑन जूम। कैद कर लिया तुम्हें फिरदौस। मुझे तो लगा था तुम आजाद करोगे। अब खुद से आजादी तो सिर्फ मौत ही दे सकती है या फिर इश्क। और हम चाहते हैं कि लाइफ में आप सब पर भी एक बार तो इश्क का फितूर जरूर छा जाए। What is true love according to you? True love, I think, it's a very difficult thing to do, but I think some of the things I believe is to be really certain you don't want to live without this person. And I think also, if you know that your happiest moments are when you're next to that person who you love. Also, I think to an extent it is when you don't want to keep changing things about that person to make them how you want them to be for you. If you kind of can love them for everything that they are. So total acceptance is also required then for true love. Yes. When is the best time to jump into a relationship? When you know the swimming pool is deep enough. You know on the sides of the swimming pool it says like 4 feet, don't jump, and then it says 30 feet, jump. Sometimes it's beyond your control. No, you you're just gonna take it. float through the water. What are the do's in love? Do's in love, trust, be truthful, Do's in love, be truthful, be honest. be open-minded to let the other person follow their dream. And what are the don'ts in love? You should not lie, you should not cheat, you should not get aggressive. These are the Overly things possessive. What is प्यार का फितूर according to you? प्यार का फितूर का मतलब है, according to me, is zid. It's the stubbornness which sometimes we, I think, see as obsession. So that is my definition. And Adi, with the way you're looking at me, it seems that you want to add something to that. It seems like I actually agree with you because now that you've said You it. agree with me? I really This is a first, guys. Please note down this time, date this moment. Adi agrees with me. What is the difference between love and obsession? Thin line between love and obsession. I was obsessed with getting fit, but I didn't really love it. There are many complicated, fancy words we can give to define the feeling of loving someone, obsession, love. We can start like trying to dissect them all, but I think in the end, yeah, it's very simple. You just know when you don't want to live without another person, right? It's too thin a line to actually try and make it. So it's a thin line then. We agree. Yeah, we agree. Yeah. What is freedom in a relationship? In a relationship, it's wonderful, I think, when you are given freedom and when you are allowed freedom and you give the other person freedom, because then that means that there's trust in the relationship, which is the core of every relationship. So if you're talking in terms of a relationship, freedom is the pinnacle of it, because then that means there are no restrictions that you put on each other. Hai ki nahi? Sounds like a very good answer to me. Yeah, you agree with me, Katrina? Kya?
what are the limitations in love? It is a bit of a compromise when you are with two people are together. There's a little bit of compromise, so it can limit you, but then it's a limitation that you've signed up for. So, yeah, you have to you win some, you lose some. Didn't understand what that meant. You don't understand? No. I think they understand. Didn't understand. Should the guy always make the first move? No, I do not believe so. There's no reason why it should be done only by the man. Do you think so? No. No. It would be nice. Like, in my mind, I think that's the way I see it, but who knows? No, I don't think so. Can work also for a girl. Gifting ideas for your date. I have been given a gift of a little clown in a box that said, no, I'm serious, little clown in a box with a case that said, you always make me smile. Well, that's a good gift. In the start, it sounded like she was kind of describing some weird thing, but flowers and chocolates also work. Define the perfect partner. A definition of a perfect woman. You can draw. No, just cough it up, get it over with, fast. Oh man, so I think because I'm sitting here with Katrina Kaif, I'm obligated to say that it is, and then you will say the same for me? Absolutely, but I'll say it so sweetly. According to me, the perfect man is Adi. Oh, there you go. Sweet, honest, trustworthy, charming. Oh, lovely. Is that a high five? No, it's a low, like. Oh, it's a low five. It's like a meaning one. A meaning one. Yeah. Okay. वैसे तो फितूर के सारे गाने हैं really close to us, but इनमें से वो कौन सा गाना है जो हमारा personal favorite है? A ये फितूर मेरा, B पश्मीना, C तेरे लिए, D रंगा रे, E होने दो बत्तियां. So to know our favorite गाना from फितूर, please stay tuned. Love में कोई break नहीं लगता, right? Absolutely. पर प्यार के इस फितूर पर एक छोटा सा ब्रेक लगाते हैं. But guys, we're waiting right here. So come back quickly. I really believe that every boy, if they go and explain to the girl's parent कि how you are and if you love her, and वो बहुत बड़ी commitment होती है. जिससे मुझे प्यार है, उसकी तलवार पे मैं अपना सर रख दूं. तूफानी दरिया से जो बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क. My real name is Karanjit or Karen, and they would say, "Are you Karen?" And I said yes, and out of nowhere comes a dozen roses or a box of chocolates. Oh, wow. Or जब कोई चीज़ बोझ बन जाती है या you're not happy in a situation, so have the courage to step out of it. Welcome back. Where were we, Adi? We were on Pyaar, Ishq, Mohabbat, Fitoor. Remember, Katrina? Of course. So, what's next? Okay, guys, so now it's time for some Bollywood love stories on Zoom. Bollywood love stories. प्यार ऐसे ही होना चाहिए कि दिल में रह जाए तो बेहतर. सब जाके एक्सप्रेस कर दो. फिल्मों में कर लेता हूँ, मैं रियल लाइफ में नहीं करता हूँ. So it is nicer to keep it in your heart. I think it makes you deeper, sweeter, kinder, gentler. Mine was actually a lot like DDLJ. मतलब उतना dramatic और comic नहीं थी. Comic थी उतनी, but उतनी dramatic नहीं थी. But yeah, so I जब वो फिल्म बन रही थी तब मुझको ऐसा लगता था कि वो मेरी ही लव स्टोरी पर बेस्ड है. मुझको ऐसा लगता है मैं कन्विंस कर लूँगा कोई भी पेरेंट को.
और मैं लड़कों को यही कहना चाहूँगा He says elope, there'll be a lot of boys and girls running. No, but I really believe that every boy, if they go and explain to the girl's parent कि how you are and if you love her, and वो बहुत बड़ी commitment होती है. I do believe that one person is made for you, कहीं ना कहीं, and at the right moment you will meet that person. हम लड़कियाँ actually ढूंढ के परेशान हो गए, ऐसे लड़के real life में नहीं होते. मतलब राज don't exist in real life. I doubt, really. सिमरन भी नहीं exist होती. मैं बोल दूँ सब लड़कों के लिए. He likes a wild side. I have some really I know some really twisted girls. I can't help. इसका बड़ा क्लियर है कि अगर मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं छत से नीचे फेंक दूंगा. अच्छा. तो इसका ये सिस्टम है. और अगर ज़्यादा प्यार किया तो फिर भी फेंक दूंगा क्योंकि मेरे को फ्री रहना है अगली लड़की के पास जाना है मुझको. You can't really have rules for human emotions and feelings. There are no rules. हर इंसान अलग है और हर एक की अलग भावनाएं होती हैं और भावनाएं भी बदलती रहती हैं. तो उसके करके आई थिंक जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर फीलिंग्स. और जब कोई चीज़ बोझ बन जाती है या यू आर नॉट हैप्पी इन अ सिचुएशन तो हैव द करेज टू स्टेप आउट ऑफ इट विद दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो. तो ठीक है, आई थिंक ज़्यादा रूल्स नहीं बनाने चाहिए जहाँ तक इंसानी भावनाएं सीमित हैं. सबसे ज़्यादा रोमांटिक चीज़ क्या की है आपने? My most romantic moment मैंने नहीं किया. It was done for me. I think when it was the first time that I was starting to talk to my husband, he had sent me flowers from God knows where to my room. I was in Oman Sur, so if anybody knows where that is, it's like the end of the earth, in the middle of nowhere, literally, and where there are no flowers at all. And he had them flown in from Switzerland and brought in for me for Valentine's Day. And he sent me a mixie D and this beautiful letter, and it was very nice. It was my favorite Valentine's Day. I think life mein you have moments with your significant other that are funny and crazy. My husband spent a lot of time everywhere I would go, every restaurant, or I'd be out with friends, and all of a sudden they'll go, my real name is Karanjeet or Karen, and they would say, are you Karen? And I said yes, and out of nowhere comes a dozen roses or a box of chocolates. Oh, wow. Or I would go home and there would be a box of chocolates sitting there, or some random place somebody would come from somewhere just with one rose. So all these different things he would do. So he does a lot more than romance than I do. जब मैंने शादी की तो हमने श्रीलंका में शादी की. अरे वाह, और okay. बहुत ही प्राइवेट एक प्लेन लिया, फिर एक बोट लिया, फिर एक और बोट लिया और वहाँ पर हमारी शादी हुई थी. सो लॉट्स ऑफ रोमिंग बिफोर द रोमांटिक, इंटरनेशनल रोमिंग, नेवी रोमिंग, समुंदर रोमिंग, देन इट वाज रोमांटिक. आई एम फूलिशली रोमांटिक. अगर आप बहुत ही बेवकूफ़ चीज़ें नहीं करते हैं प्यार में, देन यू आर नॉट एक्चुअली इन लव. लड़कों को बेवकूफ़ चीज़ें कर रही है, लड़कियों का कंपस के साथ उनका नाम लिखना और उनके छत के नीचे, उनके विंडो के नीचे आई लव यू स्क्रीम करना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. यू हैव टू डू द, इट्स इम्पोर्टेंट है. जिससे मुझे प्यार है उसकी तलवार पे मैं अपना सर रख दूं. तूफानी दरिया से जो बगावत कर जाए वो इश्क. भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क. इश्क जो बगावत पे आ जाए, इश्क जो दुनिया से लड़ जाए. ओहो, ऐसा इश्क हुआ है रणवीर? अरे क्या लगता है आप? मेरा चेहरा पढ़कर बताइए, मेरी लेवल आंखों का में इश्क? देखकर, हाँ, मेरी रूह में झांक कर बताइए. लगता हूँ ना आशिक टाइप? टोटली यार. ज्यादा मत देख, प्यार हो जाएगा तुझे. सही में इश्क उस लेवल का हुआ है? हाँ हुआ है. और कितनी बार हुआ है? एक. और अभी भी बरकरार है वो कि पास्ट में है? आपने मेरे रूह में झांका तो आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा. नहीं, नॉट रियली. फिर से ट्राई कीजिए. आप कोई लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं? नहीं. पक्का? टू गुड यार. जवाब मिल रहा है आपको? सही में. है ना? एक्टर है तू. सुपर्ब है. Sarita was your student? Yeah, she was my student. क्या बात कर रहे हो? Oh. But Sarita was my student. Not a boxing student, but she was my on my classes. कौन सी क्लास? यही जो public speaking, communication skills, personality development वाली थी. क्या कम्युनिकेट किया है आपने? ना? एकदम. Actually हालांकि उन्होंने propose किया था. Don't lie. मैंने हाँ सच है कि उन्होंने कहा था कि चलो यार डिनर पे चलते हैं. तो मैं चला गया खुशी आज तक वहीं खा रहा हूँ डिनर में. तो इतना आसान था आपको पटाना? हाँ, एक्चुअली कॉलेज में मैं बहुत शाना नहीं था. मैं बहुत मतलब ये एनसीसी में था तो कहते हैं ना फौजी दौड़े. ये बाल छोटे और काले गलुड़े हो गया था मैं धूप में घूम के. तो ज़्यादा लड़कियाँ मुझे नहीं देखती थी और किसी ने नहीं कहा कि मेरी स्माइल क्यूट है.
बस जो पहली लड़की ने मुझसे कहा कि चलो डिनर पर चलते, मैंने पकड़ लिया यार, लाइक पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, मैंने इसको शादी कर लेता मैं। तो क्या वो पहली लड़की थी जिससे आपने आई लव यू कहा, जैसे फिल्म हाँ, में भी वो मेरी कहते हैं? पहली डेट थी। अच्छा, हाँ, और very good वॉलेट में भी उन्हीं की फोटो होगी ना? नहीं, वो और मेरे बेटे दोनों की फोटो।